ज्योति स्टेनो टाइपिंग कॉलेज में आप सभी बच्चों का स्वागत है। ये बच्चों डिक्टेशन क्लास है। ये कैलाश चंद्रा की मैं डिक्टेशन पढ़ रहा हूँ। कैलाश चंद्रा डिक्टेशन नंबर है 229 और ये डिक्टेशन आप मैं जैसे पढ़ूँगा तो इसको शॉर्ट हैंड में आप लिखिए। लिखने के बाद फिर 10 मिनट आपको इसको जैसे जो शॉर्ट हैंड में लिखी है उसको पढ़िए। और पढ़ने के बाद जो हमारी वेबसाइट है, अगर आप जैसे इसमें अपनी एक्यूरेसी जानना चाहते हो और जो सबसे ज़रूरी है, डेली की 2 डिक्टेशन तो आपको ट्रांसक्राइब करनी चाहिए, नहीं तो जो है एक्यूरेसी में काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। तो वेबसाइट है jyotisstenotypingcollege.com। तो इस वेबसाइट पर जा कर के आप इसको टाइप कर सकते हैं और क्या कहते हैं, इसका मंथली या ईयरली सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और जो है जितनी भी डिक्टेशन है, इससे पहले की सारी हैं, एसएससी इम्पॉर्टेंट डिक्टेशन है, लीगल डिक्टेशन है, किसी भी तरह की डिक्टेशन आप लिखना चाहते हैं, उसकी आउटलाइन देखना चाहते हैं, तो जो है उस सॉफ्टवेयर पर टाइप करना चाहते हैं, सारे जो फैसिलिटीज़ इस वेबसाइट सॉफ्टवेयर पर अवेलेबल है। यानी कि ये वेबसाइट के ऊपर ही हमने सॉफ्टवेयर सारे बना रखे हैं और वहाँ से जो है आप अपनी क्या कहते हैं शॉर्ट हैंड को अच्छा कर सकते हैं। अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ कैलाश चंद्रा डिक्टेशन नंबर 229। तो आप रेडी हो जाएं। एक बार मैं स्टॉप वॉच निकाल लेता हूँ। एक बार ये फैन बंद करना भैया, वो पहला बटन बंद कर दो, शायद पहले बटन से शायद। हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डिक्टेशन स्टार्ट आफ्टर 5 सेकेंड। Mr. Deputy Chairman, sir, we are discussing the budget for the year 2002-3, which is the best year of the 10th 5-year plan, and therefore it is appropriate that the Finance Minister has given a bird's eye view of what has been achieved during the first 9 plans. The economic review also gives a comprehensive view of our achievements as well as of certain shortcomings here and there. I would therefore congratulate the Finance Minister and his ministry for placing before us a realistic picture as has emerged during the last 50 years and the approach which the Finance Minister thinks we should adopt towards the 10th 5-year plan. This is not an ordinary budget for 1 year or for 2 years. This budget should be looked at from the point of view of the beginning of our next journey towards the 10th 5-year plan. The Finance Minister has been bold because there is nothing secret about the budget in the plan period. The 10th plan, as it has been presented in the draft form, is before the people. There it has been envisaged that in order to see the plan through, about rupees 17,000 crores would have to be raised in the country both at the state and at the central level. So the taxes which have been imposed in this year's budget were not something which came suddenly. He has therefore to make a bold and courageous effort not to play to the foolery but to be realistic and practical if we go to see the 10th plan also through. I have been saying on the floor of the House that the tax burden has been more or less increasing from year to year. I do not want to repeat what I said last year, but it is clear from the economic survey as well as from his speech that during the last 10 years, the tax revenue of the country, both central and of the state, has increased. Most of it has clearly come out of either excise duties at the central level
or sales tax at the state level. We are also not to forget that when development takes place, industrial centers and population increase, the municipalities and the corporations have to levy various taxes. Their revenue generally comes out of what is called octroi duty. Now somebody has got to foot the bill of development, and this bill more or less during the last 10 years has been footed generally by the people. In this context, one has to analyze the situation and find out whether these taxes have come out of nothing or whether these taxes have come out of something more which has been put into the pockets of the people as a result of the development that has taken place in our economy. The survey says that the national income has gone up by about 40%. The per capita income has gone up by 20%. How that has been distributed among the various sectors of the society is a matter which is under investigation, and I hope before long the committee will be able to place before us statistics regarding the distribution of the national income. There is one thing which comes to my notice, and it is this: when we are having a planned economy, it must be based on actual statistics. Our statistical apparatus in this country is really defective. Probably it is in the course of making. If we point out the defects to the government and the planning commission, as we see them, they might create a better apparatus so that from year to year we will know exactly where we stand. As the Honorable Finance Minister has stated in his speech, production has increased more or less according to our expectations. Industrial production has increased more or less according to our expectations. Industrial production has gone up during the last 10 years by about 66%. Agricultural production has gone up by 1/3, but if you look at the industrial production from a wider view, it gives a better picture. From the index figures of industrial production that have been supplied, one finds that there are in this country certain established industries like jute, textiles, etc. If the rate of production in new industries like the steel industry, the increase in electricity, and certain other things are taken into consideration, we will find that the production has gone up by about 100%. Now, actually, this is the achievement as far as the two plans are concerned. Therefore, in trying to criticize or make comments on this year's budget, particularly, one has to take stock of the situation as it exists as a whole. Certain trends have been visible. The trends show that prima facie during the last 10 years, certain concentration of wealth has taken place. The government has recently appointed a committee which will look into it. 51 सेकंड का बनाना एक बार.
तो ये जो स्पीड थी जैसे 106 की थी, 106 की स्पीड थी, और जो है 10 मिनट इसको पढ़िए आप, फिर उसके बाद जो है इसको सॉफ्टवेयर पे जाकर के टाइप कर दिए। सॉफ्टवेयर मैंने बता दिया इस वेबसाइट के ऊपर है। वेबसाइट पे एडमिशन लेने का तरीका है, उस पर एक बटन है लाल कलर का, एडमिशन फॉर गवर्नमेंट जॉब ओनली, उस पर क्लिक कीजिए, वहाँ रजिस्ट्रेशन कीजिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप जो है स्टेनो कोर्स में जाइए, वहाँ पर मंथली या ईयरली इंग्लिश स्टेनो बेसिक टू गवर्नमेंट जॉब वो कोर्स ले लीजिए। उसमें बेसिक भी है, उसमें क्या कहते हैं ये डिक्टेशंस क्लास भी हैं, सब तरह के हैं, जितने भी टाइपिंग सॉफ्टवेयर्स हैं। अगर आपका कोई टाइपिंग का टेस्ट भी आया हुआ है, किसी इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के किसी भी डिपार्टमेंट का टेस्ट है, तो उन सभी के जो सॉफ्टवेयर हैं उसमें अवेलेबल हैं, और वहाँ जा कर के आप अपने टेस्ट को दे करके अपनी उसमें कामयाबी पा सकते हैं। स्टेनो वाले खास करके डेली की डिक्टेशन एक तो ज़रूर जैसे लिखें और उसको टाइप भी करें और अपनी एक्यूरेसी को जानें। और जो आउटलाइन नहीं आती है तो उसमें पीडीएफ दे रखी होती है, उस पीडीएफ से उस आउटलाइन को उसको 5-7 बार 20 बार प्रैक्टिस कर लें, जिससे जो है आगे वो जैसे आपको दिक्कत ना करे। इस क्लास के अंदर इतना है बच्चों। नमस्कार।